शमिताभ, मैं भी हूं। थैंक यू। शमिताभ, मैं हूं। ये मी। I am Shamita. No. शमिताभ, मैं हूं। Shamitab मैं हूँ. I am Shamitab. No, I am Shamitabh. Your mistake. I am Shamitab. No, I am Shamitabh. I'm bigger than you. I'm taller than you. I've been in the industry for 45 years. मैं Shamitabh. What do you say? Enough. उम्र क्या है तुम दोनों की? 97 years. 97 years? No. 97 years की अक्ल होनी चाहिए तुम दोनों में. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is Akshara, and we're introducing her in this film. She's the one that causes all the terror and all the problem between us. But she's also a lovely lady. She gets us together. Thank you, Thank sir. you so much, Akshara, for being with us. Thank you so much. A big hand for Akshara Hassan. This is her first film. I guess we now entertain some questions and answers, or what do we do? The सवाल for you is, सर धनुष के नाम का ये पहला पार्ट और आखिरी पार्ट उसको तोड़ा गया, फिर बच्चन साहब का नाम, तो why शमिताभ सर? कोई और कॉम्बिनेशन नहीं था? Imagine a film called Dhamitabh or something like that. It doesn't sound right, no? Or Hamitabh. It doesn't sound nice. Right. Yeah, I got my जवाब. Yeah, okay. I got my जवाब. Thank you so much. मिस्टर बच्चन, आपके लिए सवाल है सर. सर ये पिडली पिडली क्या है? मतलब everybody is saying that पिडली पिडली. So, Pidli is a euphemism for... Okay. जी हाँ. सर सच में? Yeah, I think it's a very polite way of saying, I want to go to the loo. Now we all know the meaning of piddly piddly and दोबारा मत पूछना. I think it comes from the word piddle. Piddle. Yeah, which means, yeah. Sir, I got it. Sir. Actually, piddly also means a very small thing, inconsequential, rubbish thing. So that says it all. So that's the safe answer. Right, that's a safe answer. Dhanush, this one's for you. Mr. Bachchan, Thalaiva of Bollywood. How was the experience working with him? That's it. I'm just really blessed. I got to work with one Thalaiva. Right, amazing. Yes. Akshara, this one's for you. I've heard, और मैंने कहीं पढ़ा था, पीसी सर ने बोला है खुद, हाँ, उन्होंने ये बोला है कि मिस्टर बच्चन के साथ और धनुष के बीच में आप डेब्यू कर रही हैं, फिर भी जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, that was unbelievable. What do you have to say on that? Thank you, Balki sir, for that. Actually, thank you because without sir standing behind me saying it's okay, I would not have been able to be that confident. So thank you, sir, for that. So, yeah. Super. And my mom also is like, it's okay. So, Right, mom is there. yeah. Sarika ma'am, Thank you स्वागत है for आपका. standing outside Pixie on that day, okay? Thank you. Most welcome, sir. But I have one question for Bachchan Sahab. Sir, what do you think has been more instrumental in your success as an actor, your voice or your acting? Sir, neither. Why? What has been instrumental then? आप जैसे लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते ना. नहीं, because I think you can जैसे ऑडियो वीडियो बोला तो आपकी आवाज़ में तो we don't have to see you. रेडियो में भी सुनते हैं तो मालूम है तो अमिताभ की आवाज़ है. मैं चला जाता हूँ सर यहाँ से. क्यों चले जाएंगे?
आपने कहा we don't want to see you, we just want to hear you. Oh So- no, I said we don't need to see you to recognize it. No, thank you so much, sir. It's very gracious of you to say that, but really it's been really the strength of the followers and people who have been watching me for the last 45 years, their encouragement, their love and affection, and with each passing year, to continue your affection and love for me is truly grateful. I have no words to thank you, and I hope that your encouragement keeps me going for as long as you want me to, and that's all that matters to me. Thank you, sir. PC sir, this one's for you. Working with Mr. Amitabh Bachchan, अक्षरा की तो आपने तारीफ कर ही दी है, and धनुष. दोनों में ज़्यादा अच्छा शमिताभ कौन है सर? अभी दोनों यहाँ पे बोल रहे थे. Doing all Balki's film because Amit ji is acting. That's the only truth. I always tell him that. He's been a biggest inspiration in front of the camera. That is very important to me to work. And he's the reason for me to be here. Who Shamitabh is, the film will tell you. Thank you. Thank you so much. Miss Shinde, एक सवाल आपके लिए भी है. And that is कि इस फिल्म के पीछे क्या इंस्पिरेशन था? Was it only Mr. Balki या Mr. Bachchan, Mr. Dhanush, अक्षरा? क्या था वो जो ये सब्जेक्ट लेके आपने कहा हाँ ठीक है, I'll produce the movie? I'd like to believe कि कुछ तो मेरे से इंस्पिरेशन हुआ होगा या घर पे जो होता होगा तो उससे होगा. घर का इंस्पिरेशन यहाँ आ रहा है, उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे सर. The entire film is actually inspired by that, actually. Correct. She's correct. But I really want to just thank a few people. I think Abhishek's not here. This film is co-produced by actually their company, Amitji's and Abhishek's company, and Rakesh and Damani, Mr. Damani, and Eros together. So thank you very, very much, all of you guys, for making this film, making this happen. Thank you, Dhanush. Thank you, Akshara. Thank you, Gauri. PC, thank you. I know the truth now. I'll never work with you again. Amitji, thank you very, 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 very much. Okay, guys, you can ask the questions now. We'll Over shut to the up. media. Okay. Yeah. कि मैं कवि तो नहीं पर कविता लिखी है जब से देखा है आपको बच्चन. मेरे पिताजी करीब पहुंच गए 55, मेरा भी बीत गया बचपन, तब से लेके आज तक सबका बाप है अमिताभ बच्चन. Last two paras, please. Your age is, you are increasing your age. ढलता सूरज जिसका प्रकाश चढ़ता है और चढ़ता ही जाएगा. आप भी खाली हाथ आए हो, आप भी खाली हाथ ही जाएगा. पर आपने अपनी परछाई भी इतनी बुलंद कर दी है कि जिस वक्त पता चला आप नहीं हो तो दो चीज अवश्य हो जाएगा. एक हिंदुस्तान में कर्फ्यू और हर हिंदुस्तानी का दिल शमशान बन जाएगा. Thank you, sir. Thank you. Sir, I met you at KBC and you liked the poem and you told me to record the poem. Okay, we will do that. Thank you so much. हेलो अमिताभ सर, आपके यहाँ पे स्टेट मधु फ्रॉम BBC रेडियो. सर मेरा सवाल ये है, इससे पहले हमने आज प्रोमो देखा है लेकिन गाना हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिटली, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप इतने बिजी रहते हैं लेकिन बिजी शेड्यूल में से सिंगिंग के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? और बहुत अच्छा गाते हैं आप कहते हैं कि आप अच्छा नहीं गाते हैं लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं. जी, कृपा है आपकी. और मेरा ऐसा मानना है कि जब लोग ऐसी अवस्था में होते हैं जैसा कि आपने मुझे देखा है प्रोमो में, स्वर जो है अपने आप निकल पड़ते हैं. सीट पर बैठते ही, शावर चलते ही, साबुन लगाते ही गाना निकल पड़ता है. मैं भी एक बाथरूम सिंगर ही हूँ और वहाँ से कभी बाहर निकल नहीं पाया. ये बात बाल्की को कैसे पता चली, ये अभी भी मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है. लेकिन ये सोच करके उन्होंने मुझे वहाँ बैठा दिया है पॉट के ऊपर और कहा कि गाओ बेटा, दिल खोल के गाओ. आपको अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. लेकिन दरअसल मुझे कभी शिक्षा मिली नहीं है और यदा कदा बाल्की जैसे लोग मुझसे कह देते हैं गाना गाने के लिए. तो इस गाने के पीछे इलैयाराजा जैसे एक महारथी, उनके संगीतबद्ध किया हुआ एक कोई गाना
मेरे लिए गाना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन उनके सामने जा कर के गाना इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि आप गाना बना करके भेज दीजिए, मैं यहाँ चुपचाप अपने बाथरूम में बैठ करके इसे गा दूँगा, और ऐसे ही हुआ। तो अगर आपको पसंद आया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन दरअसल इसका श्रेय जो है वो इलैयाराजा को जाना चाहिए। थैंक यू सर। Good evening, sir. Towards your left. Sorry, towards your right. My question is to Dhanush over here. Over here. Down south, you have been doing films in which you have larger than life characters, but in Bollywood, you are doing unconventional roles, be it Ranjana, in which you played an obsessed lover, or be it Shamitab. So, what is the reason for that? I've been trying to mix my characters as much as possible down south also. But here, there's a fixed image for me there, which I'm stuck. So I'm restricted there. I mean, so here though I don't have anything to lose, so I can experiment with whatever I want. And this kind of, I should really thank Balki for giving me a character which is so special, a film which is so special, and also the opportunity to work with such big legends. So yeah, there's the reason, I don't have anything to lose. I can do whatever I want here.